Hello friends, my name is Vikas Sharma. I'm practicing company secretary. Friends, welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स रिसेंटली अभी सेबी की तरफ से एक अप्रूवल मिला है। वो सेबी की अप्रूवल एनएससी को मिला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, कि आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी स्टार्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स ये अभी फरवरी 2023 में अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला है एनएससी को फ्रॉम सेबी। एंड सेबी से नोड आने के बाद में अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वर्किंग या फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दी है। एंड फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो क्वेश्चन सबके माइंड में आ रखा है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी होती है, कंपनी के कोई भी शेयर्स जो है वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, हम बीएससी एनएससी में जो लिस्टेड है कंपनीज, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, उनके शेयर्स हम परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सोशली एक्टिव जो कंपनीज है उनके शेयर्स ही परचेस कर सकते हैं, या फिर शेयर्स परचेस करेंगे तो इसको डीमेट फॉर्म में होंगे, या फिर शेयर्स कौन परचेस कर सकता है, या फिर इसका सोशल ऑडिटर जो है उन एंटरप्राइजेस का या फिर उन एंटिटीज का वो ऑडिट कौन कर सकता है। फ्रेंड्स इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं अभी प्रोफेशनल्स के माइंड में। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए कुछ एफएक्यूज है एनएससी की तरफ से, वो आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। उससे हम जनरली ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज एंड यहाँ सोशल ऑडिटर का क्या रोल है। तो बेसिकली सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कुछ एफएक्यूज है। उन एफएक्यूज के साथ साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल ऑडिटर जो प्रोफेशनल हो सकते हैं उनमें कौन कौन प्रोफेशनल्स अभी कवर्ड है, या फिर सभी प्रोफेशनल्स कवर्ड है या कुछ प्रोफेशनल्स कवर्ड है। तो फ्रेंड्स अभी जो एफएक्यूज है वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट एफएक्यू है वो है, व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज एसएससी। A social stock exchange is a separate segment of the existing stock exchange that can help social enterprises to raise funds from public through stock exchange mechanism. फ्रेंड्स यहाँ पे सोशल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। टू रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। अब यहाँ मैकेनिज्म जो है, जो जनरली स्टॉक एक्सचेंज के मैकेनिज्म है उसी की तरह से है। एसएससी विल एक्ट, फ्रेंड्स यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज को हम शॉर्ट में एसएससी, यहाँ पे पूरे वीडियो में एसएससी यूज करेंगे। एसएससी विल एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन सोशल एंटरप्राइजेस एंड फंड प्रोवाइडर्स that can help them to select those entities that are creating measurable social impact and reporting such impact. Certain type of social enterprises, that is not for profit organization, that is NPOs, that meet the registration criteria can register on SSC and undertake to make continuous disclosure on their social impact. Such NPOs may or may not choose to raise funds through SSC, however, would continue to make disclosure including on social impact to stock exchanges. फ्रेंड्स यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज सोशल एंटरप्राइजेस। सोशल एंटरप्राइजेस में कौन होता है, लाइक ट्रस्ट, एनजीओ या सेक्शन 8 कंपनी कौन है, वो एक बार थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे आगे। सबसे पहली बात तो है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने शेयर्स कह सकते हैं या फिर अपना जो सोशल इम्पैक्ट है या सोशल जो डिस्क्लोजर्स अगर एसएससी की पोर्टल पे करते हैं तो वॉलंटरली आप कर सकते हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन इनटू द एसएससी। तो यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट मीट द रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया भी हम डिस्कस करेंगे, कैन रजिस्टर ऑन एसएससी एंड अंडरटेक टू मेक कंटिन्यूअस डिस्क्लोजर ऑन देयर सोशल इम्पैक्ट। Friend, second one is what is social enterprise in the context of social stock exchange? Which entity can identify itself as a social enterprise? Social stock exchange identifies the following two forms of social enterprises that are engaging in activities of creating positive social impact and that meets the primacy of their social intent. Not-for-profit organization and for-profit social enterprises. In order to establish primacy of social intent, any entity, be it not-for-profit organization (NPO) or for-profit of social enterprises, that is FPE, should meet all three criteria mentioned under Regulation 292E2 of the ICDR regulation. Briefly, these criteria require that the entity must indulge in activities prescribed under Regulation 292EA, E2A. फ्रेंड्स ये 292E2A है, ये एक आईसीडीआर की रेगुलेशंस है। और इन रेगुलेशंस को एक बार हम चेक करते हैं कि बेसिकली ये रेगुलेशंस क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप आते हो, यहाँ पे 292 पे आते हैं हम सर्च करके, 292। फ्रेंड्स दिस वन,
The social enterprise shall be indulged in at least one of the following activities: eradicate hunger, poverty, malnutrition, inequality. यहाँ पे promoting health care का भी एक point है, education का point है, promoting gender equality का points है, या फिर इस तरह के जितने भी ये points हैं, जो कि ये जितने भी points आई थिंक ये 17 points है, यहाँ पे अगर कुछ points जो कवर कर रही है सोशल एंटरप्राइजेस, तो वो एसएससी में रजिस्टर करवा सकती है। तो फ्रेंड्स ये जो एफएक्यू है, एफएक्यू में एक जो पॉइंट है, एंड दैट द एंटिटी मस्ट टारगेट अनडिजर्व्ड और लेस प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन सेगमेंट और रीजंस व्हिच हैव रिकॉर्डेड lower performance in the development priorities of the central or state government. Further, in order to be identified as a social enterprise, it shall demonstrate that 67% of its activities qualifying as eligible activities to the target population shall be demonstrated by either of the following. फ्रेंड्स यहाँ पे जो सोशल एंटरप्राइज है उनका डिमोन्स्ट्रेशन 67% ऑफ एक्टिविटीज किस तरह से डिफाइन होगा? एटलीस्ट 67% ऑफ इट्स रेवेन्यू of the immediately preceding 3-year average of revenues comes from providing eligible activities to members of the target population. Friends, eligible activity जो हमने 17 points cover किए. Second point is that at least 67% of the immediately preceding 3-year average of expenditure has been incurred for providing eligible activities to members of the target population, or members of the target population to whom the eligible activities have been provided constitute at least 67% of the immediately preceding 3-year average of the total consumer base or the total number of beneficiaries. Friends, यहाँ पे तीनों points में और है. However, corporate foundations, political or regional organizations or activities, professional trade associations, infrastructure and housing companies, except affordable housing, shall not be eligible to be identified as social enterprise. तो friends, मतलब political parties वगैरह है या फिर corporate foundations है, वो ट्रीट नहीं किया जाएगा एज ए सोशल एंटरप्राइज. काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. विच सोशल एंटरप्राइज आर नॉट एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड or raise funds through social stock exchange? A social enterprise shall not be eligible to register or raise funds through social stock exchange if any of its promoter group or director or selling shareholder or trustees are debarred from accessing the securities market by SEBI. फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Second one is that if any of the promoter or director or trustee of social enterprise is a promoter or director of any other company or social enterprise which has been debarred from accessing the securities market, if the social enterprise or any of its promoter or director or trustee is a willful defaulter, if any of its promoter, director or trustee is a fugitive economic offender, if the social enterprise or any of its promoter, director, trustee has been debarred from carrying out its activities or raising funds by Ministry of Home Affairs or the central government, state government, charitable commissioner, or any other statutory body. Fourth point is that what is the not-for-profit organization in the context of social stock exchange, that is SSC? A not-for-profit organization is an entity which meets the criteria to be identified as a social enterprise and is any of the following entities. Friends, यहाँ पे 4 points दिए गए हैं. A charitable trust registered under public trust. Second one is charitable society registered under the Societies Registration Act, a company incorporated under Section 8 of the Companies Act, any other entity as may be specified by the SEBI. Friends, यहाँ पे अभी ये 3 entities है और कोई भी entity हो सकती है लेकिन वो SEBI के द्वारा specify होना चाहिए. What is for-profit social enterprise in the context of SSC? For-profit means a for-profit social enterprise is an entity which meets the criteria to be identified as a social enterprise and is of the following entities: a company under the Companies Act operating for profit and does not include a company incorporated Section 8 company, a body corporate operating for profit. Friends, यहाँ पे for profit making में ये 2 points हैं. What are the ways in which a not for profit organization can raise funds through stock exchange? A NPO after registering with SSC may raise funds on social stock exchange through issuance of zero coupon, zero principal, ZC, ZP instruments through private placement or public issuance, donations through mutual fund scheme as shall be specified by the SEBI, any other means that SEBI may specify in future. Friends, अभी basically zero coupon, zero principal जो point है, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, इसके थ्रू वो फंड रेज कर सकती है. फ्रेंड्स, इस पे जो डिटेल्ड जो डिस्कशन है, जो मोड ऑफ रेजिंग द फंड, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट अभी थोड़ा सेबी से क्लियरेंस आ जाए हर एक पॉइंट पे.
क्लैरिटी आ जाए. इट इज मैंडेटरी. Is it mandatory for a NPO to register in order to raise funds through stock exchange? Yes, it is mandatory for a not-for-profit organization to register with social stock exchange before it raises funds through social stock exchange. However, a not-for-profit organization may continue to raise funds through any other means as permissible under the law, whether it is registered or not with social stock exchange. Eighth point is, what are the criteria for registration on social stock exchange in respect of NPO? SEBI, by its circular dated September 22, has prescribed certain minimum requirement in order for a not-for-profit organization to register on social stock exchange. जो एसएससी है वहां पे रजिस्टर होने के लिए जो एनपीओ का जो क्राइटेरिया है, ये 5 क्राइटेरियाज हैं. दैट इज मैंडेटरी एज ऑफ एनपीओ 3 ईयर, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए 12A 12AA 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वैलिड एटीजी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, minimum INR 50 lakhs as annual spending, and minimum INR 10 lakhs of fund in the past year, etc. Friends, यहाँ पे एक पॉइंट है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएससी आर आल्सो परमिटेड टू प्रिस्क्राइब एडिशनल रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर फॉर एन एनपीओ टू रजिस्टर ऑन. कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी हो सकती है. इज इट मैंडेटरी फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद सोशल स्टॉक टू सीक लिस्टिंग? इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एनपीओ विच आर रजिस्टर्ड विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज to seek listing. However, it shall mandatorily seek registration with SSC before it raises funds through a stock exchange. अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर फंड्स रेज करना है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. A not-for-profit organization may choose to register on a social stock exchange and not raise funds through it. It can also continue to raise fund through any other means. Is it mandatory to register for profit social enterprises in order to raise funds through SSC? No. A profit social enterprise need not to register with social stock exchange before it raises funds through SSC. However, a for-profit social enterprise shall comply with all the provisions of ICDR, AIF regulations before it can raise funds through SSC. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है एसएससी पे रजिस्ट्रेशन करवाना. अगर आपको फंड्स रेज करना है तो आप एसएससी जो है स्टॉक एक्सचेंज उसमें आप रजिस्टर करवा सकते हो. हाउ कैन ए profit social enterprise raise funds through social stock exchange? A for-profit social enterprise may raise funds through issue of equity shares on main board, SME platform, or innovators growth platform of stock exchange, as the case may be. Issue of equity shares to an AIF, including social impact fund, issue of debt instrument, any other means that SEBI may specify in future. If for-profit organization issue equity shares on main board, SME platform, or innovators growth platform of stock exchange, as the case may be, it shall also need to meet the eligibility criteria for the respective platform as mandated under the SEBI ICDR regulations 18. 12th point is whether the retail investor can invest in securities issued by the social enterprises in social stock exchange platform. Retail investors are permitted to invest only in the securities offered by for-profit social enterprises under the main board. In all other cases, only institutional investors and non-institutional investors can invest in the securities issued by the social enterprise. As per SEBI, a retail individual investor is one who applies or bids for a specified securities for value of not more than 2 lakh rupees, and non-institutional investor is separately defined as an investor other than a retail individual investor and qualified institutional buyer. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है वो परमिटेड है for profit social enterprises only in the main board. In all other cases, institutional investor and non-institutional investor ही invest कर सकता है. Will I qualify for registration if 67% of my activities last year were in one or more 2 items from the list of eligible activities by my immediately preceding 3-year average is below 67%? No, you are not eligible to apply for registration or listing on the SSC till the 3 years average of your activities is not greater than or equal to 67% of your total activities. Will an NPO promoted by the promoters of a body corporate be eligible to apply? If the NPO is dependent on the corporate for more than 50% of its funding, then it shall not be eligible to apply. Whether an NPO needs to be in the operation for 3 years before registering on the SSC? Yes, an NPO is mandatorily required to be in operations for 3 years before registration on the SSC. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो नई कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं आज की डेट पे, सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट, नई कंपनी विद इन दी 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन, 2 ईयर और ऑपरेशन, 3 ईयर ऑपरेशन में नहीं कर सकती. 3 साल कंप्लीट होना मैंडेटरी है रिक्वायर्ड टू बी इन ऑपरेशंस के लिए.
What proof is needed to be demonstrated that NPO has been in operation? Documents such as certificate of incorporation, audited financial statement for 3 years is required to be sure that the NPO has been in operation for the 3 years. Can an NPO that is not registered on the NGO Darpan portal register on the Social Stock Exchange? No. The registration of NPO on the NGO Darpan portal is mandatorily required for registering it on a Social Stock Exchange. Who will certify the documents that are needed to be submitted? The documents are required to be certified by CEO, trustee, statutory auditor, any other two signatories from governing body. If an NPO registers on the SSC, will they have to follow the compliance even if they do not list any instrument on it? Yes, NPO is required to comply with all the applicable SEBI LODR Regulation 15 and circular thereof. Is this meant for Indian entities only, or international NPOs can also be registered? Only Indian entities can register in social stock exchange right now. Friends, यहाँ पे एक point ये है, will it be possible for an NPO to renew the registration after a year if they have notarized any money in the previous year through SSC? Yes, the answer is yes. NPO may renew the registration after a year if they have not raised any money in the previous year through SSC. This is subject to them having completed all the disclosures as required. Friends, यहाँ पे काफी जनरल पॉइंट है. Are for-profit organization eligible to issue zero coupon, zero principal instrument for raising fund? The answer is no. Zero coupon, zero principal ZCZP instrument shall be issued only for a not-profit organization registered on a social stock exchange. तो फ्रेंड्स, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, वो सिर्फ एनपीओ के लिए एप्लीकेबल है. Which not-for-profit organizations are eligible to issue? Which not-for-profit organizations are eligible to issue zero coupon zero principal instrument? Following conditions need to be fulfilled by not-for-profit organization NPO to issue ZCZP instrument. The NPO must be registered with Social Stock Exchange. Friends, उसके लिए आपको SSC में आपका registration होना mandatory है. Zero coupon, zero principal instrument have specific tenure and can only be issued for a specific project or activity to be completed within a duration specified in the fundraising document. The specific project or activity for which the ZCZP instrument are being issued must fall under the list of eligible activities, जो हमने already देखा है 15 या 17 points थे, specified under regulation 292E of SEBI ICTR regulations. फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी सिंपल पॉइंट्स है, बाकी हम थोड़ा इसको क्विकली कंक्लूड करते हैं. व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर पब्लिक इश्यूएंस ऑफ ZCZP इंस्ट्रूमेंट बाय एन? प्रोसेस इसका सिंपल है. A not-for-profit organization shall file draft fundraising document with the SSC where it is registered along with the fees as specified by the SSC, along with the application to seek in principle approval to list ZCZP instrument on SSC. The Social Stock Exchange shall make draft fundraising document available on its website for a period of 21 days from public comments. SSC may seek clarification from NPO if required within 30 days from the filing of the draft fundraising document or receipt of clarification, if any, sought by the SSC from NPO organization, whichever is earlier. The SSC shall provide its observation on the draft fundraising document to the NPO. The NPO shall incorporate the observations of the SSC in draft fundraising document and file the final fundraising document with the SSC prior to the opening of the issue. The same procedure to be followed for the private issuance of ZCZP instrument to the extent possible. Can zero coupon, zero principal instrument can be issued in physical form? The answer is no. Zero coupon, zero principal instrument shall be issued in demat form only. Is there any limit for issue size of zero coupon, zero principal instrument? The minimum issue size for zero coupon, zero principal instrument shall be rupees 1 crore and minimum application size shall be 2 lakh rupees. What is the minimum subscription required? The minimum subscription required to be achieved shall be 75% of the funds proposed to be raised through issuance of ZCZP instrument. Are instruments listed by the social enterprises available for trading in securities market? The instrument issued by the NPO are not available for trading in secondary market, whereas the instrument issued by the for-profit organizations are available for trading in securities secondary market on respective platform of the stock exchange on which they are listed. Friends, यहाँ पे काफी important term है
जो प्रोफेशनल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज सोशल ऑडिट? Social audit refers social impact assessment of project program executed by the social enterprises through an independent examination by a certified social audit professional. What is social audit firm? Social audit firm is an entity which has employed social auditors and has a track record of minimum 3 years for conducting social impact assessment. Who can act as a social auditor? An individual who is registered with a self-regulatory organization under the ICAI or such other agency as may be specified by the SEBI. फ्रेंड्स अभी रिसेंटली ICAI के मेंबर्स के लिए है कि उस इंडिविजुअल की डिस्कशन हुआ है who is registered with the self-regulatory organization that is ICAI or any other such agencies. इसका मतलब ये है कि CS या फिर CWAs या lawyers या फिर कोई भी एक अदर एजेंसीज है उनको भी सेबी नोटिफाई कर सकता है. एंड हु हैज क्वालिफाइड a certain certification program conducted by the NISM and holds a valid certificate can act as a social auditor. फ्रेंड्स यहाँ पे NISM एक एग्जाम्स अभी रिसेंटली एग्जाम से कंडक्ट करवा दिया, उसके अंदर अगर आपको एग्जाम क्लियर है, NISM से एग्जाम क्लियर है सोशल ऑडिटर का, तो भी आप सोशल ऑडिटर बन सकते हो. इज देयर एनी लॉक इन और मिनिमम पीरियड बिटवीन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन NPO एंड रेजिंग ऑफ फंड? नो, देयर इज नो लॉक इन और मिनिमम पीरियड बिटवीन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी NPO and raising of funds from the market. इज मर्चेंट बैंकर रिक्वायर्ड? फ्रेंड्स जनरली क्या होता है कि जब हम IPO लाते हैं या फिर DRHP या कुछ भी वर्किंग हम करते हैं तो मर्चेंट बैंकर की रिक्वायरमेंट रहती है तो फाइलिंग दी DRHP विद दी सेबी. बट इस केस में मर्चेंट बैंकर की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज अभी ये जो सेगमेंट है, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो सेगमेंट है काफी अभी नॉर्मल पीरियड पे है, तो यहाँ पे इसकी जो कंप्लाइंसेस है काफी लाइटर मोड पे है. तो मर्चेंट बैंकर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट. Is there a validity period for observations issued by SSC on draft fundraising document? A period of 6 months is the validity period for observations issued by SSC on the draft fundraising document. Fund raised by the NPO shall be in the form of grant only. Friends, यहाँ पे क्वेश्चन है whether NPO is required to obtain FCRA registration before raising funds from the foreign institutional investor or individual non-resident donors. The answer is foreign investors are currently not allowed to invest through the SSC. Foreign funds are currently not permitted. अगर ऐसा कुछ सेबी की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे उसका FCRA registration and all. Will the investors be treated as donors? Yes, the investor will be treated as donors as per normal accounting principles. Whether ZC, ZP instrument holdings are transferable. Trading is not permissible in ZC, ZP. But they can be transferred for any other purposes such as transferred in case of legal hire. Whether ZC, ZP instrument will be subject to securities transaction tax? No. The answer is no. ZC, ZP instrument will not be subject to securities transaction tax. That is STT. Whether a listed NPO can raise additional fund for the same project through another ZC, the answer is yes. Listed NPO may raise additional fund for the same project through another ZC, ZP instrument. फ्रेंड्स इसकी जो 45 क्वेश्चन है, 45 का जो आंसर है, इसके लिए एक सेपरेट जो है इसके ऊपर एक वर्किंग करेंगे. ZCP का जो प्रोसेस है और उसका प्रोसेस और जो गवर्नेंस रूल्स है वो एक बार डिस्कशन करेंगे, क्योंकि NPO जो है NPO ZP के थ्रू फंड्स रेज कर सकती है. कैन ए लिस्टेड NPO रेज फंड्स फॉर मोर देन वन प्रोजेक्ट बाय इशूइंग मल्टीपल ZC, ZP instrument, one for each project? The answer is yes. Listed NPO may raise funds for more than one project by issuing multiple instruments, one for each project. Whether a registered NPO raised fund outside social stock exchange is required to disclose? Yes, registered NPO raised funds outside SSC is required to be disclosed the details of such funds as a part of annual disclosure under LODR. Is termination of ZCP, ZC, ZP instrument equivalent to delisting? Yes, termination of zero coupon, zero principal instrument equivalent to delisting. Will foreign investors like FIs, FPA, NRI investor be allowed to invest in NPO fundraising? Foreign investor like FI, FPI, NRI investor will not be allowed to invest in NPO fundraising. Friends, अभी recently जो फॉरेन फंडिंग जो आती है, फॉरेन फंडिंग के लिए अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट करना या फिर डोनेट करना, वो अभी SSC में या फिर इस तरह के जो FAQs में हम पढ़ रहे हैं तो अभी अलाउ नहीं है. शायद सेबी इसके ऊपर काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो जीरो कूपन, जीरो बॉन्ड हो या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस क्या है, उनकी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क अगर सेबी लाता है तो उसके साथ भी हम एक बार जरा पॉइंट्स सारे डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म है अभी इंडिया में, और काफी कंट्रीज में ये अडॉप्ट भी हो रखा है ऑलरेडी, लाइक कनाडा में ऑलरेडी अडॉप्टेड है, तो ऐसे कुछ कंट्रीज में अडॉप्टेड है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ सोशल ऑडिटर की जो रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो काफी बढ़ जाएगी, और प्रोफेशनल्स इस एग्जाम्स को क्लियर करके, ऐसे कोई एग्जाम है जो NISM के थ्रू कंडक्ट हो रहा है, वो एग्जाम को क्लियर करके भी सोशल ऑडिटर बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जो CA फैटर्निटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ICAI के थ्रू है, उनको सोशल ऑडिटर की ऑलरेडी एक अप्रूवल मिल चुकी है सेबी से। अभी बाकी प्रोफेशनल्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, बट फिलहाल आप NISM का एग्जाम देके भी सोशल ऑडिटर बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, सोशल ऑडिट या फिर जो एग्जामिनेशन है NISM का एग्जामिनेशन, उसके ऊपर एक सेपरेटली हम वीडियो बनाएंगे आफ्टर आफ्टर लुक आउट द ऑल द क्यूरिकुलम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो सोशल ऑडिटर का जो कोर्स है या फिर सोशल ऑडिटर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स को आप रीड कर सकते हो, FAQ हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस हम कंटिन्यूसली बनाते रहते हैं फ्रेंड्स, और जो भी अपने प्रोफेशनल कम्युनिटी है उनके लिए। फ्रेंड्स, आपको लगता है हमारा वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।